Hello everyone. Today I am starting with the topic of themes in short story Salt by Mahasweta Devi. इसमें हम लोग आज थीम करेंगे. Let us start now. Exploitation is the major theme of this story, highlighting the predicament. Predicament means difficulty. Predicament of the innocent tribals who are taken advantage of not only by Uttam Chand but also by everyone in a position of power. One of Mahasweta's major concerns in her fiction as well as in her activist writings is the denial of land rights to tribals. In her essay, The Slaves of Palamu, that was written in 1983, she describes the disaster effects of the development in the Palamu area. वो क्या बोलती हैं? At one time, the district boasted of great jungles. मतलब इस डिस्ट्रिक्ट के बहुत ग्रेट बड़े बड़े जंगल थे. Today, the jungles are largely destroyed and the district can be described as dry upland. ये बोला है एक उन्होंने अपनी स्लेव्स ऑफ पलामू एक ऐसे लिखा था, उसमें ये वर्डिंग है. She recounts the growth of the bonded labor system in the region after the downtrodden people's revolt against the British and the Jagirdars was crushed in 1857. After 1857, the zamindars and the moneylenders usurped all the land. The Bandhua system or debt bondage system was born. The villagers in Salt suffered the long-term effect of this system. अब हम बुक से ही कुछ लाइन पढ़ेंगे जो कि महाश्वेता देवी ने जो स्टोरी लिखी है ना, शॉर्ट स्टोरी सॉल्ट, ठीक है, उस बुक में से कुछ एक्सट्रैक्ट इग्नो की बुक में दिए हैं, वो मैं पढ़ रही हूँ. The entire village is shackled by Uttam Chand into forced labor without wages. For generations, year by year, year after year, they walk 12 miles to Uttam Chand's village, Tahar, to repay the unwritten debt of their forefathers. For just a few morsels a day, and a meager share of the harvest they till his land without pay. मैं दोबारा से पढ़ती हूँ. For just a few morsels a day and a meager share of the harvest they till his land without pay. Their share of the crop too is added to their debt. Now, I'll start again. The story demonstrates the nexus. Nexus होता है connection. The story demonstrates the connection between politics at the macro or national level and power structure at the local level, represented by the landowner, the trader, and the youth committee. The authorities are portrayed as blind to what they do not wish to perceive. The law exists in name only, where the poor tribals are concerned. When under pressure from tribals demanding a fair arrangement, Uttam Chand finds a legal but inhuman mode of retaliation, badla. The narrative has a strong didactic element. डिटेक्टिव का मतलब होता है आपको सीख देना, वो एक एलिमेंट है इसमें. The narrative has a strong didactic element, problematizing the issue of justice and making a strong appeal to the reader's social conscience. Purti's role in the tragedy highlights the impossibility of making black and white moral judgments in certain situations. The headman accuses Purti of endangering the lives of his entire community
through his carelessness in allowing the elephant to see him stealing salt. अब पूर्ति बोलता है, पूर्ति, I wonder what punishment you deserve. पूर्ति नहीं बोलता है, हेडमैन बोलता है पूर्ति को, पूर्ति, I wonder what punishment you deserve. Those tribals who leave the village for mines and cities to work as potters remain there. But you came back. You failed and thought that you knew the world much better. So you took up cudgels. Cudgels होता है मशाल लेना या बैटन बोलते ना, मशाल या बैटन. So you took up cudgels against Uttam Chand. He is a tiger. Besides, you have now earned the wrath of the elephant. Wrath means gussa. Yet, now I'm starting again. ये हेडमैन की वर्डिंग नहीं है, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट कर रही हूँ. Yet, after the death of 3 men and an elephant, the headman feels that someone else was responsible. Where life is reduced to a bare struggle for survival, conventional morality ceases to apply. Purti violates the law, law को तोड़ना. But the text suggests that the actual blame lies elsewhere. The story constructs a parallel between Akoya and Purti, each a loner, struggling for survival, each destroyed by rule and the system. The law of the jungle is juxtaposed, means contrast में है, अलग है. The law of jungle is juxtaposed to against human law, to suggest ironically that the latter is not necessarily more just. अब हम इसकी थोड़ी एंडिंग पढ़ेंगे. हमने थीम कर लिया, एंडिंग भी थीम से ही रिलेटेड है. The last 2 paragraphs of the story are crucial to this didactic theme. Thinking about the unnecessary death of 3 tribals and Akoya, the headman feels uncomfortable with the official version of the story. इसमें लिखा है, apparently it was clear that the elephant had killed man and got killed in turn, but the indirect cause seemed to lie elsewhere. He wonders who is responsible. हेडमैन को आश्चर्य हो रहा है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है इस चीज़ के लिए. अब वो बोलता है, The 3 men and an elephant would not have had to die if salt was available. वो समझ में आ जाती है कि अगर सॉल्ट होता ना तो ये तीनों आदमी नहीं मरते और एलिफेंट भी नहीं मारा जाता. Someone else was responsible. Someone else. The man who did not sell salt, जिसने salt नहीं बेचा. Or someone or some other rule, some other system. The rule and the system which allowed Uttam Chand to go scot-free for not selling salt. Scot-free means tax-free. उसको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना, उसने सॉल्ट नहीं दिया लेकिन उसको फ़र्क भी कोई नहीं पड़ा, है ना. Although, now I'm starting the other paragraph. Although he doesn't have the sophisticated vocabulary to analyze the implication of this prediction, he senses that this has not been fair at all. मतलब उसके पास कोई जो हेडमैन था उसके पास कोई sophisticated vocabulary नहीं थी, लेकिन ये सब एनालाइज करने के लिए, लेकिन उसने बाद में यही बोला कि this has not been fair at all. ये बिल्कुल ठीक नहीं है, ठीक नहीं हुआ, बिल्कुल भी ठीक नहीं हुआ. A grave injustice has been done, but it would be futile to convince the authorities of this. कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मीन्स अगर हम अथॉरिटीज़ को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि हाँ उत्तम चंद की गलती है तो बहुत ही मतलब फ्यूटाइल होगा ये, इसका कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा. The headman leads the villagers back across the sandy river bed to Jajjar, realizing that they could not hope to have their problems understood by
अर्बेनिटीज़ मीन्स वही मतलब गांव के लोगों को कहाँ ले गया, रिवर बेड से जो है वो जज्जर ले गया, और वहाँ पे उसने यही डिसाइड किया उन लोगों के साथ कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये शहर के लोगों को ये चीज़ बात समझ नहीं आएगी कि सॉल्ट कितना ज़रूरी है। ट्राइबल्स के लिए सॉल्ट कितना ज़रूरी था, सॉल्ट ना होने की वजह से उन्हें क्या क्या करना पड़ा। जब उनको मार्केट में सॉल्ट नहीं मिला तो वो एक जो एलिफेंट कोई भी जानवर जो है ना, एक पत्थर रहता है, सॉल्ट का पत्थर रहता है, उसको चाटते हैं, उसको लिक करते हैं। तो वो उन्होंने सोचा कि चलो हम वही पत्थर ले लेते हैं, लेकिन कुछ एक एलिफेंट ऐसे होते हैं जो कि पहचानते हैं अपनी चीज़ को, और अगर उनकी चीज़ के साथ कोई छेड़खानी की जाए तो उनको बहुत गुस्सा आता है। अकोया उन्हीं उसी टाइप के एलिफेंट्स में से एक था। तो जब उसने देखा ना कि वो ये तो वो वैसे ही गुस्से में था क्योंकि उसके हर्ड ने उसको उसको बाहर निकाल दिया था, वैसे ही वो गुस्से में था। तो उसने जब देखा कि कुछ लोग जो है मेरे सॉल्ट को हाथ लगा रहे हैं या लेके जा रहे हैं, तो उसको बहुत गुस्सा आया। बीच में पहले उसने नोटिस किया, फिर उसने कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब उसको गुस्सा आया ना तो उसने उन लोगों को मार दिया, 3 लोगों को मार दिया। और ट्राइबल्स भी क्या है कि वो लोग, लोगों को उनको पता था कि ये नेचर रहता है इन एलिफेंट का, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले तो उन्होंने छुप छुपा के चीज़ें वो सॉल्ट लेना शुरू किया, लेकिन बाद में वो भी एकदम से वो हो गए कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा, है ना, उनको डर नहीं लगा बाद में। लेकिन इसका अंजाम जो है वो बहुत गलत निकला, क्योंकि इसमें यही बोला गया है कि जो जंगल का रूल है वो अलग है, जंगली जानवरों के अपने रूल्स होते हैं। अगर हम उनके साथ छेड़खानी करेंगे या हम उनकी टेरिटरी में जाएंगे तो इसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी ठीक नहीं होगा। लेकिन ट्राइबल्स की अगर सिचुएशन देखी जाए कि उनको सॉल्ट बाहर भी नहीं मिल रहा है, उनको लैंड अपने लैंड ओनर जो है उससे भी नहीं मिल रहा है, और उसको जंगल से भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या करेगा। तो ये बहुत ही एक ख़राब सिचुएशन है। अभी भी कुछ टाइम पहले राष्ट्रपति जो हैं हमारी मुर्मू, उन्होंने बोला था कि जजेस के सामने ये बोला था कि जो ट्राइबल लोग हैं उनकी समस्याएं सुनी जाएं, उनके केसेस को जल्दी ख़त्म किया जाए। बिकॉज़ बहुत टाइम छोटी सी चीज़ के लिए उनको इसमें डाल दिया जाता है ना, जेल में डाल दिया जाता है, उनकी पूरी ज़िंदगी जेल में निकल जाती है। तो ट्राइबल्स की हालत अभी भी अच्छी नहीं है हमारी कंट्री में। चलो, थैंक यू सो मच। हमने इसका एक, आप काफ़ी कुछ लिख सकते हो इसमें, एक्सप्लॉयटेशन में तो पहले भी थी, अब भी हो रही है, और शायद आने वाले टाइम में भी एक्सप्लॉयट किया जाएगा ट्राइबल्स को। तो इसमें आप काफ़ी कुछ आंसर लिख सकते हैं। चलो, ओके, थैंक यू सो मच।